Hello everyone. I hope you look good and you all are practicing problems, learning concepts. This question I received in doubt, and this is a question of sound wave, as you can see from the book SBT. Okay, so let us navigate to this one. A point source of sound is moving uniformly along the positive x direction with velocity v naught. Okay, so there is this point source of sound. Okay, and this is moving along the x-axis with velocity v naught. At t equal to 0, the source is at the origin. So let us mark this as the origin. Let us call it y-axis. This is x-axis. So initially it is here and it moves in this direction, this source. At t equal to 0, the source is at origin and meets the compression pulse C1. So यहाँ पे जब ये source है, then it is emitting compression pulse. For simplicity, we will be indicating wave like this. Okay, so जब ये यहाँ है, then it is emitting one compression pulse, and then after a time interval t, it emits another compression pulse C2. So in later on, after time t, so after time t, this source of sound will be where? It will be somewhere here, and this distance will be equal to vt. So source is here, और जब ये यहाँ है, again it is emitting another compression pulse. Write the equation of wavefront corresponding to compression pulse C2. So यहाँ से जो जब source यहाँ था, then the pulse that it has generated, that is C2, उसके लिए you have to write the equation of wavefront at a time t. And wavefront equation you are going to write at time t where t is greater than t. So definitely, at time t, यहाँ से ऐसे wave generate हुआ, डन है, ऐसे कुछ generate हुआ, ऐसे. Okay, and then you have to talk about equation of wavefront at time what? At time small t. So यहाँ से जब वो निकल गया उसके बाद later on after time t. कहने का मतलब देखो, इसको अगर आपने t equal to 0 कहा है, reference time is starting from here. So at time t it is here. And when I'm saying, or the question is saying at a small time t, that is getting measured uh, uh, from the time when this source started from the origin. समझ रहे हो ना? ये small t is not the time यहाँ से wave जब निकला उसके बाद का टाइम का मेजरमेंट नहीं है. टाइम इज गेटिंग मेजर्ड from the moment this source started moving from the origin. So that you have to keep in your mind. Now you have to write the equation of wavefront. Wavefront क्या होता है? Wavefront is a surface of constant phase. जैसे सोर्स है ये, मैं यहाँ पे, मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं होती तो चलो मैं दो बनाऊंगी यहाँ पे. सपोज कर लो यहाँ से कुछ ऐसे निकला. सो आई मीन वेव फ्रंट इज व्हाट? सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, पॉइंट्स विच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, उसको आप कंबाइन कर लो. कंबाइन करने के बाद जो सरफेस मिलेगा दैट इज वेव फ्रंट. सो यहाँ से बहुत सारे ऐसे ऐसे वेव्स निकल रहे हैं. अगर सबका सपोज कर लो टी टाइम के बाद, स्मॉल टी टाइम के बाद, सपोज कर लो यहाँ पे मैं टी इक्वल टू 0 ले रही हूँ, एंड देन फ्रॉम हियर, आफ्टर दैट, आफ्टर टी टाइम इट इज हियर, क्रेस्ट यहाँ पहुंचा है. ठीक है, एंड सो यहाँ वाला भी क्रेस्ट यहाँ पहुंचा होगा आफ्टर टाइम व्हाट? स्मॉल टी. डन है. एंड इफ I combine, I mark all such crest and then combine them, we will get a sphere. So in case of point source, a sphere used to be the wavefront. Okay, so a spherical wavefront हमें मिलेगा. और इस spherical wavefront का अगर आप देखो, स्फेरिकल वेवफ्रंट का रेडियस क्या होगा? बिकॉज वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ वेवफ्रंट, सो वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ व्हाट? इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर. इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर आप कैसे लिखते हो? सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. और ये हम कब लेते हैं? व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन. If center of circle is somewhere here, let's say it is at x is equal to a and y is equal to b. In that case, you write x minus a ka square plus y minus b ka square is equal to r ka square. In case of a sphere, that is a three-dimensional body. So वहां पे अगर origin पे उसका center centered है, then x square plus y square plus z का square is equal to radius का square. And if center of that sphere is not at the origin, somewhere A, B, C है, then x minus a का square plus y minus like that. So this is pure mathematics, I would say. ठीक है, सो हमें क्या निकालना है? देखो, इक्वेशन ऑफ वेव फ्रंट. अब आप देखो यहाँ से, सबसे पहले तो मार्क कर लो सोर्स कहाँ था. सोर्स यहाँ था ना, जब ये वेव फ्रंट, जब यहाँ से ये वेव निकला. ठीक है, सो ये जो वेव निकल रहा है यहाँ से, जो भी वेव निकला, उसके लिए सोर्स पॉइंट क्या है? दिस वन इज द पॉइंट.
Okay, and then wave will keep on traveling like this, keep on traveling like this. So if you are going to draw the wavefront at different interval of time, then all those spherical wavefronts will have center at this point. So चलो मैं फ्रेश बनाती हूँ, उस पॉइंट सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज एट दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट, आई मीन दिस इज x इक्वल टू वी टी, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो. सो जब आप स्फेरिकल वेवफ्रंट का इक्वेशन लिखोगे, दैट इज स्फीयर का, x माइनस वी टी का स्क्वायर करोगे, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब रेडियस क्या होगा? सो रेडियस बहुत ही सिंपल है, यहाँ से वेव निकला, ठीक है, सो कितना ट्रैवल किया होगा वो कितने टाइम में पूछ रहा है, एट अ टाइम टी तुम्हें बताना है, बट टी का मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है. सो इफेक्टिवली फॉर व्हाट टाइम wave coming from here has traveled, if you are talking about a small t time, then you will say t minus t time. क्योंकि देखो टी टाइम तक तो आने में लगा सोर्स को यहाँ पे, देन वेव इज गेटिंग जनरेटेड. सो इफ यू आर गेटिंग आस्क्ड, I mean wave front at a time t, it means that wave coming from this source at this point, or you can say C2 pulse which got generated from this point, has got how much time to travel? T minus t time. Okay, so radius will be basically how much? Radius will be basically uh, time taken is this much, velocity of wave is v, so v into t minus t. Done it? Uh, okay, velocity of wave is given as v, okay, and that is your v naught. This is your v naught, right? This is the velocity of what? This is velocity of source. Source का velocity v naught था, wave की velocity v given है question में, ठीक है. So radius तुम्हारा क्या होगा? Radius will be this much. Okay, so finally you write the equation. Equation क्या लिख रहे थे हम? This will be radius का square, so that is v का square, and this is t minus t. So this is going to be your answer. I hope you are able to make sense of it. If you know wavefront a bit, and if you know basics of this wave thing, you can easily come to this conclusion. Okay. I hope it is clear, but in case you're confused somewhere or you want me explain further, you can always let me know in the comment section. Okay. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.